Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be talking about direct and indirect narrations. So let's start. Basically, we are going to talk about the direct speech first of all. Direct speech is that form of the narration in which the actual words of the speaker are reported. It may be divided into the two parts: the reported speech, the actual words of the speaker, and the reporting speech. For example, the introductory words which are being added to the reported speech. इस चीज़ को समझने के लिए बस ये समझने के that the teacher said you should leave the class. अब इसमें जो you should leave the class है ये actual words हैं टीचर के, तो ये आपका reported speech हो गया, और जो reporting speech है वो होगा teacher said. ठीक है? For example, the reported speech comes before or after. अब indirect speech देख लेते हैं. Indirect speech is that form of the speech in which what one speaker says is reported by another with utmost accuracy but without using his actual words. ठीक है? इसकी भी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी बात. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि द टीचर सेड दैट वी शुड लीव द क्लास. ठीक है? तो अगेन यहाँ पर आपने एग्जैक्ट टीचर के वर्ड्स नहीं कोट किए, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस आर एसेंशियली इंटरचेंज. तो कैसे आपने चेंज करने हैं उसके कुछ रूल्स हैं. पहला रूल है एलिमिनेशन ऑफ इन्वर्टेड कोमास. इन इनडायरेक्ट स्पीच द कोमास आर ओमिटेड. द कंजंक्शन दैट एक्सेप्ट इन सर्टेन एरियाज व्हिच विल बी डिस्कस्ड लेटर. तो दैट जो होता है ना, इट इज बेसिकली यूज्ड टू जॉइन द रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच. कैपिटल लेटर जो होता है ना फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का, उसको आपने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देना है, और दोनों को ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, दैट यूज करना है, और जो है ना इन्वर्टेड कोमास हटा देना. एग्जाम्पल देखिए. निजमा सेज द फैट डॉग इज बार्किंग. निजमा सेज रिपोर्टिंग स्पीच है, फैट डॉग इज बार्किंग रिपोर्टेड स्पीच है. इन द इनडायरेक्ट स्पीच दिस सेंटेंस विल रीड एज निजमा सेज दैट द फैट डॉग इज बार्किंग. अब दूसरा जो एसेंशियल काम आपने करना है ना, दैट इज द चेंज ऑफ द प्रोनाउंस. Pronouns in the reported speech are to be changed when necessary. Pronoun of the first person can be changed to the subject of the reporting speech. For example, he जो कि subject of the reporting speech है, says I have pronoun of first person. ठीक है? I have no money with me. ठीक है? तो जो I और me है वो दोनों के दोनों pronouns of first person हैं. ठीक. अब आपने अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना तो कैसे करेंगे. एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन थर्ड पर्सन, द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंगली. दिस सेंटेंस विल रीड ही सेज दैट ही हैज नो मनी विद हिम. Pronoun of the second persons are changed to the person of the noun or pronoun to whom the reported speech is addressed. For example, you said to Zen, I would be happy to welcome you in my house. यहाँ पर जो प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन है ना वो यू है. ठीक है? इट इज टू बी चेंज टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. ये नहीं है कि जैन. ठीक है? अब इस चीज को मैं जरा कन्वर्ट करके फिर आपको समझाती हूँ. यू टोल्ड जैन दैट यू वुड बी हैप्पी टू वेलकम हिम इन द हाउस. आपका जब डायरेक्ट स्पीच थी ना, तो उसमें जो आपका रिपोर्टेड स्पीच था उसमें यू आपका सेकंड था. यू जो आपकी सेकंड फॉर्म थी वो यू थी. जब आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना तो आपको सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मतलब जैन को इंडिकेट करने के. Change in tense. If the verb of the reporting speech is in present in future tense, then the tense of the words of the reported speech does not change. For example, direct ये होगा कि that he says I am poor but honest man and will not pick up anybody's pocket. इसका indirect version होगा he says that he is a poor but honest man and will not pick anybody's pocket. और अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है वो पास्ट टेंस में है. ठीक है? तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो भी आपको पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में, will shall को would should में, can में को could might में, और रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सप्रेस करिए ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उस केस में आप उसका जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे. ये चीज आपने जहन में रखनी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.